सिर्फ 20 दिन के अंदर more than 28 lakh Ukrainians have become refugees in the neighboring European countries. As I speak, कुछ 20 लाख लोग और borders की तरफ बढ़ रहे हैं. This is the biggest refugee crisis since World War II, and in the last few days, it has shown us an ugly truth: racism. It never went out of fashion. In fact, it's blatantly out there. Oh, not against the Ukrainians. वो तो blonde and blue-eyed हैं. नहीं, सच्ची. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with... And so, of course, I understand and respect the emotion. ये थे यूक्रेन के पॉलिटिशियन जिनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे बीबीसी के होस्ट. लेकिन कुछ जर्नलिस्ट तो भैया और काफी आगे निकल गए. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. डी अगाता भाई साहब ने एकदम केयरफुली अपने शब्दों को चुना. ये कह रहे हैं कि यूक्रेनियंस डिजर्व मोर सिंपैथी देन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि यूक्रेनियंस ज्यादा सिविलाइज्ड हैं और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में तो वॉर आम बात है, चलता रहता है. वेल, सोशल मीडिया पर आउटरीच होने से इन्हें तो माफी मांगनी पड़ी, बट देयर आर मोर जेम्स लाइक हिम आउट देयर. Philip Corbet of BFM TV France said, "We're not talking here about Syrians fleeing. We are talking about Europeans living in cars that look like ours to save their lives." अबे हमारे जैसा दिखता है, मेरे जैसी कार भी चलाता है. आजा आजा भाई, आजा. तू अपना ही भाई है. This is not a developing third world nation. This is Europe. वही तो, यूरोप में वॉर कौन लड़ता है? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी तो ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान में लड़े गए थे. अबे साले. These are prosperous middle class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East. Some other journalists wrote that Ukrainians are so much like them because they also use Netflix and have Insta accounts. मतलब seriously, इन लोगों के हिसाब से तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया के देश अनसिविलाइज्ड हैं, गरीब देश हैं, और वहाँ वॉर जैसी क्राइसिस नॉर्मल है, इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है. Clearly, fellow humans who are being oppressed, that is not enough criteria for these journalists to show solidarity. उसके लिए white होना जरूरी है. Blonde hair and blue eyes होना is a plus. Because these people are naturally all about peace and so they deserve peace as compared to the less civilized black or brown जनता from these poor countries. मतलब हम कुछ इंसानों को इंसानों की तरह देख ही नहीं रहे हैं. We have classified them. और ये classification is not just by these ignorant racist journalists. Major European countries welcomed Ukrainian refugees, provided them with food and shelter. Kudos to them. But the same countries, Middle East और North Africa के refugees को accept नहीं करती. इन जगहों पर भी conflict हुए हैं. Sometimes even more severe than what has happened in Ukraine. For example, Austria, जो भी खुले दिल से Ukrainian refugees को accept कर रहा है. पिछले साल it was rejecting Afghan asylum seekers and didn't mind sending them back to Taliban. अरे ये छोड़िए. Polish और Ukrainian security authorities, हमारे Indian students, African students, they were being stopped from getting on the trains, from crossing the borders, while Ukrainians were given priority instead. बोले तो for these journalists, politicians and security authorities, Ukrainian lives are more valuable and thus worth saving as compared to others who seek refuge, because these others don't look like them, don't dress like them, and supposedly come from less civilized locations. All these practices are forms of racial discrimination according to Article 1 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. चलिए racism को एक बारी भूल भी जाएं, तो this whole shock about the fact that war has visited a European country instead of a third world nation, ये बताइए इन third world countries में war लेकर कौन गया? सीरिया में रशिया घुसा, यूएस ने भी इंटरवीन किया टू फाइट आइसिस, जिससे भर भर के रिफ्यूजीज फ्लेड टुवर्ड्स वेस्ट. रशिया और यूएस दोनों ने ही अफगानिस्तान को इन्वेड किया. यूएस इराक में मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स ढूंढने निकला, कुछ नहीं मिला. और भी यूरोपियन कंट्रीज कौन सी दूध की धुली हैं? Until very recently, fighting crazy wars was Europe's thing. वर्ल्ड वॉर से पहले ये सब वॉर अपने घर की बाहर जाके करते थे या आउटसोर्स किया करते थे, बिल्डिंग कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड. कितने ही प्रॉस्परस देशों को तो इन्होंने लूट लूट कर गरीब बनाया है, इंक्लूडिंग इंडिया. आज रशिया के इन्वेजन से आम यूक्रेनियंस की जान को खतरा है और इनको जहां भी पॉसिबल हो रिफ्यूज मिलना ही चाहिए. लेकिन अगर यूक्रेनियंस की तरफ ये सिंपैथी इज बिकॉज ऑफ द वे दे लुक, ड्रेस और प्रे, देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम. Supporting innocent human beings who need protection should be the only reason. The core principle behind granting asylum to anybody. We are all equal. कोविड क्राइसिस ने तो ये साफ साफ दिखा ही दिया है. एक इनह्यूमन वॉर में सेविंग इनोसेंट ह्यूमन लाइव्स शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विदाउट एनी रेस बेस्ड डिस्टिंक्शन. What do you think? Are Ukrainians more deserving of sympathy than Afghans and Iraqis? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.